Hello everyone, konnichiwa. My name is Sumit and you are watching Nihongo Hacks. Guys, today I will share information about hiragana. In my previous video, I explained a little bit about Japan and Japanese language and how to get job in Japan. In this video, uh, I teach you hiragana. Little information about hiragana. Hiragana is basically used to express 46 different sounds used in the Japanese language. We suggest you start learning hiragana, then katakana, then kanji. Now, there are three scripts in Japanese. So, number one is hiragana, number two katakana, number three kanji. In Japanese, uh, hiragana use 70%, katakana 10%, and kanji 20%. So, kanji is little hard. Katakana and hiragana is similar. If you learn hiragana first, it will be easier to learn katakana next. Hiragana will help you learn Japanese pronunciation properly, read Japanese beginners textbooks, and write sentence in Japanese. Let's take a simple example. I am an engineer. How to talk in Japanese? Okay. So watashi wa engineer this. So this first shows kanji. Okay, kanji is little hard. Secondly, hiragana. Wa. This is a wa particle. Uh, then katakana. That is engineer word. Is katakana. Because engineer is not originated from Japan. This engineer word coming from outside countries. So it is a foreign word in Japan. And foreign words we use for foreign words we use katakana. Now this in hiragana. So first take vowels. There are five vowels in Japanese and o. So how to write a? So take a simple example. आ ओके हम इस तरह से आ लिख सकते हैं. सो ये आ लिखने के लिए ये कुछ स्ट्रोक दिए. इट मीन्स दिस इज अ फर्स्ट स्ट्रोक, second stroke, and then third stroke. Right? Again, ichi, ni, san. Okay. So like this. Now second e. How to write e? This is the first stroke. Ichi, and then ni. Okay. Now u. Simply ichi, ni. Okay. This way. It means stroke makes easier to write. Now a. How to write a? Chi, ni. Right? So o. This is o. हम जापानीज में एक पार्टिकल भी है ओ. हम उस पार्टिकल को इस तरह से लिखते हैं ओ एज अ पार्टिकल. पार्टिकल का मतलब होता है कि जिस तरह से हमारी लैंग्वेज में मतलब हिंदी या इंग्लिश इसमें हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं उसी तरह से जापानीज में भी पार्टिकल्स होते हैं और बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं. सो दिस इज अ पार्टिकल एंड दिस पार्टिकल सेज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट पार्टिकल. ओके. Now next, constants. So constants, if I say k or a, ka become ka, ki, ki, ku, ke, ko, right? But in pronunciation in Japanese, we say ka, ki, ku, ke, ko, like this. So how to write ka? Okay. This is a ka. Ichi, ni, san. Right? By using stroke mark, we learn hiragana. So it becomes easier to learn.
So I suggest you can use stroke mark. Again ka, right? Again ka. Now ki, how to write ki? So ki, ichi ni san. So मैं ये बार बार इची नी सान क्या जो कह रहा हूँ वो इची का मतलब होता है 1, नी का मतलब होता है 2 और सान का मतलब होता है 3. ओके, सो की इची नी सान, इची नी सान, इची नी सान. Okay, now ko. Ko is very simple, like this. And k, right? Again ichi ni san, ichi ni san, ichi ni san. K is very simple. Ko ichi ni, ichi ni, ichi ni, ichi ni, like this. Now take a simple quiz. Write the following words in hiragana. So how to write these words in hiragana? First I take aka, aka. So how to write aka? Simply a, ichi ni san, ये हो गया आ. और हाउ टू राइट का? सो सिंपली ये हो गया का. सो aka, aka it means red, right? Aka it means red. Now how to write o? Simply draw a, ये हो गया आ, aka a. Now o, how to write o? So simply ये हो गया o और ये हो गया आओ. आओ का मतलब होता है ब्लू कलर. नाउ अकी, अकी दिस वे, अकी. ओके, अकी दैट इज ऑटम. और ये हम इस तरह से लिख सकते हैं, दैट इज ये हो गया आ और ये हो गया की. ओके, नाउ टेक इकी. इकी का मतलब होता है स्टेशन और इट इज वेरी सिंपल. इकी, ड्रॉ ई एंड देन की. ये हो गया इकी. इकी में ये ए और ये हो गया की. वेरी सिंपल. ओए, ओए का मतलब होता है ऑन टॉप. सो ऊ, हाउ ट्राई टू, दिस इज अ ऊ. ए ओए मतलब ये हो गया ओए. ओए का मतलब होता है ऑन टॉप. ये हो गया ऊ और ये हो गया ए. आप इस तरह से लिख सकते हैं. नाउ दिस इज फॉर योर होमवर्क. ये इट मीन्स हाउस. और ई भी होता है. ई का मतलब होता है गुड. ये हो गया ई मतलब डबल आई. इसका मतलब होता है गुड, अच्छा. Like this. This is for your homework. You can solve. And if you have any problem related this one, you can commit me. Within 24 hours, I give you reply. Now, second, sa. Sa, she, su, se, so. How to write it? So again, for sa, ichi, ni. Ichi, ni. Ichi, ni. Okay. It means
This is the first stroke mark, and this is second stroke mark. Now she, how to write she? Very simple. Only L shape. You guys, she, right? Now Sue, how to write Sue? So first stroke mark ichi, second stroke mark ni, right? Again first stroke mark ichi, ni, ichi, ni, right? Now say how to write say? Ichi, ni, san. A first stroke mark, second stroke mark, and then third stroke mark. Again ichi, ni, san. First stroke mark, second stroke mark, and third stroke mark. Again ichi, ni, san. ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक मार्क, सेकंड स्ट्रोक मार्क, थर्ड. Okay, this way. Now so, how to write so? So this way. Only one stroke mark. Without lifting pen, you can draw. Okay, so this is very easier part. Now constant ta, टी. जापानीज में टी नहीं होता, उसके बदले ची होता है, और तो नहीं होता तो सु होता है, ते और तो. So how to write ta? So ichi, ni, san, yon. ये हो गया फर्स्ट स्ट्रोक मार्क, ये हो गया सेकंड स्ट्रोक मार्क, थर्ड स्ट्रोक मार्क, देन ये हो गया फोर्थ स्ट्रोक मार्क. अगेन इची, ni, san, ichi, ni, san. It means a first stroke mark, second stroke mark, third stroke mark, and then fourth stroke mark. Okay. Now how to write chi? So simply chi, ichi, ni. Only two stroke marks here. Ichi, ni, ichi, ni. Okay, ichi, ni. आप अपने बुक में अच्छी तरह से लिखिए. मेरे पास ये लिखने के लिए कुछ अच्छा बोर्ड नहीं, तो इसलिए मैं. ओके, अच्छा लिखिए आप. नाउ नेक्स्ट सु, हाउ टू राइट सु? सो दिस इज सु, सु. Again सु. Now how to write te? This is a te, simply te, te, te. Okay. Now how to write to? This is a to. First stroke mark ichi, ni. First stroke mark ichi, ni. First stroke mark ichi, ni.